अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। अच्छा, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट मिनट है ना इस वीडियो का, ये आपने बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। भाई अभी जो आप लोगों का टाइम फ्रेम रह गया ना, मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 23 डेज बाकी हैं। इन दिनों में आप एक एक घंटे या दो दो घंटे की क्लास बिल्कुल भी नहीं ले सकते, आपके पास रिवीजन का टाइम ही नहीं है। या अगर आप ऑलरेडी डेढ़ घंटे या दो दो घंटे के लेक्चर्स ले चुके हैं और 8 पेजेस अपने फिल कर चुके हैं रजिस्टर्स के, तो यू हैव नो नीड टू बी वरी। आपको उन्हें सारे पेजेस को रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं एक टोटल टॉपिक की कंप्रीहेंसिव एनिमेशन, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट। जी हां, बस आप ये 3 से 4 मिनट की एनिमेशन देख लें। आपको 2 घंटे की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपने 8 पेजेस रिवाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 3 से 4 मिनट की एनिमेशन देख लें। और हाँ, प्लस लास्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इसमें एमसीक्यूज भी साथ साथ ही डिस्कस कर दी हैं। नम्स के, आगा खान के, एमडीकैट के, ईटा के, हर टाइप का एमसीक्यू आपको इसी एनिमेशन के साथ साथ मिल जाएगा, ताकि आप उसे साथ साथ सोल्व कर लें। तो चलें, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं एनिमेशन, देखिएगा जरूर। So students, here we have juxtamedullary nephron, and blood is coming from afferent arteriole into the glomerulus. And then from glomerulus, all the blood constituents are filtered, except of blood cells and larger size proteins. Now look upon this picture very carefully. With the help of porous walls of glomerulus, podocytes, and the epithelial layer of Bowman's capsule facilitate the filtration of all the blood nutrients, glucose, amino acids, blood ions, and metabolic wastes, urea, uric acid, except of blood cells and larger-sized proteins. Now solve these riddles. Now look, this one, 180 liter per day, such type of filtrate is produced inside of Bowman's capsule lumen. If the thing is let it happen, we will die. But about 178 litre out of 180 litre filtrate is reabsorbed by selective reabsorption. Keep these things clear about reabsorption. First, its maximum take place at proximal convoluted tubule, water reabsorption, and for other metabolites. This process accomplished through both active and passive processes. But it also happens in other parts of nephron, like loop of Henle, distal convoluted tubule, and collecting duct. Second thing that you have to remember, that the very particular reabsorption take place at loop of Henle, which is generally called countercurrent multiplier mechanism. This, the critical part of juxtamedullary nephron. Loop of Henle. First, I'll show you that water is passively leaving the descending limb of loop of Henle without the assistance of any hormone. Again, overlook here. Now I will make it clear that after leaving of water to descending limb, it enters into the capillaries of vasa recta. So in the next step of countercurrent, sodium leaves the thin part of ascending limb passively without the assistance of hormone and leaves the thick part actively under the action of aldosterone. Thing you have to keep remember, it doesn't enter into the blood capillaries immediately. So reabsorption is further proceeded towards collecting duct, but from here both water and sodium are absorbed under the action of hormone, ADH, and aldosterone respectively. Here divert your focus must on the direction of this process. In tubular secretion, some ions, including hydrogen, potassium, and ammonium ions, are secreted from the blood capillaries to the lumen of nephron to make the urine more concentrated. Tubular secretion takes place in different parts of nephron, PCT, DCT, and as well in collecting duct.